So, hello everyone. Um, let's start with our tarot rituals, what we do in advance before starting a tarot card reading. See, you all would have this particular deck of the Rider-Waite version. This is the basic deck that we use in tarot. Okay. There are n number of decks that is available in the market in Amazon. And of course, uh, Abhi say I would not prefer you guys taking another deck because obviously there would be a change in the meanings and change in the color contrast, and different decks could also have different meanings. So first, if you are a beginner, you want to start a tarot card reading for yourself or for others, just go for a regular Rider-Waite version. Okay, it's easily available on Amazon. You can buy one for yourself, and let me show you one thing. So there's one card here and the one card somewhat like this. Okay. So I always keep these two cards protected on the top of my deck. Okay. And the bottom of my deck. So that the card energy is always intact. Okay. So this is the number one rule that you have to follow when you're doing a tarot card reading. And always cover it up once you're done with your readings. Just cover the cards, the top and the bottom, with these two cards, so that the energies, because you would obviously do your readings with your clients, and they would be touching your decks and you would be touching your decks, and you would be doing n number of readings in a day. So obviously it's very important for you to keep your tarot deck protected. um, the other thing, the other rule number two would be that, see, there are many pouches available in the market. Okay, so you can get a purple color pouch, or you can get something like this unicorn or whatever symbols you want, or this will help you again to keep your deck completely protected. So once you're done with your readings, obviously store your decks inside the bag. Okay, so that it is not you know, uh, disturbed by the outside energies or outside influences, so that whenever you're doing the tarot card readings, it's always accurate. Okay. The third thing that is again a very essential thing is a wooden box. You can take any box now. There are crystal box available. You can take a plastic box also. Plastic is less preferable, but you can take this sort of a wooden box for yourself and store your tarot deck inside this. So keep it one above the other, these cards, okay? And then you have to just store it in your mojo bag, a purple color bag, and then again store it in your wooden box. So that is very important. So wherever you go for your readings or your, uh, you know, meeting people outside, always carry this wooden, small size of wooden box with you, so that the energies of the tarot card is always protected. So this is very important rules, and I think everybody as a tarot card reader should be following this. It's very important. And chalo, now let's go on to the cloth. Okay. So again, so we came to the wooden cloth. So I'm using this kind of a cloth. You can take any colors which you want. You can take in velvet, you can take in satin. Purple is the color I suggest to everybody, all my students. Okay, purple colors are the best because it connects with your crown chakra, your intuition chakra, and obviously it will give you a lot of hints and a lot of clarity on when you're reading cards for people. Okay, so it's very important. Don't use too much bold colors like red, because a lot of people I've seen, they use the color red also. So red is a very color of, you can say, like a lot of aggression is added and all that. So I don't prefer using a red color. People may use any color, but I prefer a purple color, or you can take something like a multicolor, so that uh, it's good enough to start your tarot readings. So this cloth could be available on Amazon, and tarot boxes are available on Amazon. So these are the basic rules on how you have to store your cards. Okay. So
Also, you can keep some crystals or some protection crystals or some cleansing crystals in your tarot box, like a clear quartz, like a selenite, or like a purple color stone, like amethyst, or a green color stone, which is connected to your heart chakra. तो उसमें you can keep a green aventurine stone. तो इस टाइप की चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने बॉक्सेस में to energize the tarot cards. Or you can keep 4, 5 crystals of your choice so that your tarot cards are always, always, always protected. So I'm gonna show you what's wrong with this. Give me a moment. Eh, Something wrong. I'll just pause it for a moment. So you can also use a Sage bundle. Okay, it's easily available on online stores, or it can be available with me, because this is very important that you keep cleansing your cards after every reading, even if you're doing it for yourself, even if you're doing for practices. So it's very important कि आप अपने जो cards है वो अच्छे से cleanse करो. It's very important. तो थोड़ा सा इसको burn कर दो, and then you can just take the cards, rotate it, okay, so that you give that smoke to the cards and all the cards are again cleansed. So this is again a very important thing that you need to do. Okay. So these are the basic rules जो आपको follow करने हैं when you're doing a tarot card reading. Okay. One is the cloth, one is the box, one are the crystals, and how do you store the cards? Okay. It's very important. Now, coming to the um, what we'll say is, how do we start with the deck? Okay. Now it's very important because you guys are new with your deck right now. You're a beginner. You're new with your deck. So it's very important कि आप अपने deck के साथ एक connection बनाओ. Okay. It's very important that you talk to your cards. Now you won't understand all the meanings in one go. Correct? So what you will do is daily you will have to just look at the cards. Like I'm just have to, you know, okay, what's in the card? Okay, this is the magician card. Let me see. Okay, this is the three of wands. तो डेली आपको इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है कि एक एक कार्ड आपको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से. सो दिस इज नथिंग बट यू आर बिल्डिंग योर बॉन्ड विथ योर टैरो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टैरो कार्ड रीडर कि आप अपना बॉन्ड अपने टैरो डेक के साथ अच्छे से बिल्ड करना चालू करो. Because if you are not in connection with your deck, if you're not in connection with your deck only, then deck won't be able to answer to you with that accuracy. Okay. Of course, you will need a lot of practice. You will need a lot of clarity. There will be a lot of confusion also initial stage पे. लेकिन आपका सारे जो questions है that will be answered. Okay. लेकिन it's very important कि आप सिर्फ रोज अपने कोई भी एक कार्ड को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो. Talk to the cards. Okay, what is this card trying to tell you? तो इस तरह की चीजें आपको conversation बना के रखनी है आपके cards के साथ. This is the very initial process that you follow when you are getting into the world of tarot. ठीक है. It's very important. ठीक है. उसके बाद keep shuffling the decks. The art of shuffling depends on how people want to do it. They have their own ways to shuffle the cards. Okay. They can even, some people even do this way. There is a technique to do which I don't like because it messes up the deck completely. So I don't follow these kind of shuffling. It's very important कि आप अच्छे से cards को shuffle करो. And this will also come with practice. Okay. So because it is slightly a bigger version than that of the playing cards. So you will have to keep practicing this too. Because after every reading, you will have to shuffle your card decks. ठीक है. तो ये भी बहुत जरूरी है. इस चीज को भी आप अच्छे से फॉलो करें. And try to you know follow all the points that I've given to you. ये सारे points as a basic introduction of tarot, it's very very important. Okay. तो उसके बाद आपको करना ये है कि after shuffling, obviously right now you're not ready because you are still the learner, still you are in the initial process of tarot.
सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम फॉर यू टू लर्न, बट इस तरह से आपको रोज कार्ड्स को देखना है अच्छे से. ओके. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द meaning of tarot and what it is, and we will understand how was its history and how did it started. तो चलिए शुरू करते हैं. Just a second, guys. Mhm. So these are the basic information that I want to share with you guys, that tarot cards, there are 78 tarot cards in this whole deck. This is a deck of 78 cards. And these 78 cards are again divided into major arcana and a minor arcana cards. तो मेजर कार्ड्स 22 होते हैं और बाकी के जो 56 है, दैट इज द माइनर arcana is what we call. ओके, दिस इज वेरी बेसिक टैरो. तो उस तरह से आपको कार्ड्स को सेग्रीगेट करना होगा वंस यूर व्हेन यूर लर्निंग द टैरो कार्ड्स. ओके. तो segregate your major cards and segregate your minor cards, so it's better for you to understand. So when I am explaining you each and every card का मीनिंग, तो आप अपने कार्ड्स को भी देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंबलाइज विद द कार्ड्स. ठीक है. तो वो आपको देखना है, फॉलो करना है. ओके. नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ टैरो? When delving into the history of tarot, there's no practical interest, to be frank. Actually, इतना deep dive करके tarot का history जान के it's not worth it. But yes, it is very important that you know what it is, where it has come from. ये जरूरी है जानना, but it is not going to matter too much in your future. But still, it is very important that you should know, you should have the general knowledge about it. You should be concerned with how to relate your deck. These cards are a way to communicate with yourself on a subtle and deeply personal level. There are many speculations about origin of tarot cards. बहुत सारी अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई है about tarot cards. Okay. As far as what can be reliably said is tarot deck we know evolved from the Renaissance era in Italian and French decks, which transformed over the time. ठीक है. पहले के जमाने में in I think 1400s and 1500s के टाइम की बात है. तब these Italians and French people, they used to प्ले विथ सर्टन थिंग्स, और है ना, कुछ पेपर्स पे कुछ इमेजेस ड्रॉ किया करते थे या पेंटिंग्स किया करते थे. एंड दैट इज हाउ दे ट्रांसफॉर्म दोज इमेजेस इनटू अ 78 कार्ड डेक. ओके. विच वी आर राइट नाउ probably यूजिंग इन आवर डेली टैरो. ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डीपर लेवल के मीनिंग्स को जानना और समझना. ठीक है. So the deck we have today is based on the older decks and esoteric and occult subjects that were popular in certain circles during occult revival of the late 1800s. Secret societies were popping up everywhere and books about spirit and magic were immensely popular. So इस तरह से tarot का evolution शुरू हुआ. And it came to India pretty late, I think, since last, I have been practicing tarot since last 20 years. So when 20 years back, tarot काफी कम लोग करते थे in India. Of course, in abroad it was used, but in India काफी कम लोग थे, and now it's trending way too much, and people are following and relying on tarot, and it gives you a lot of insights about the situation, and it gives you a lot of clarity as to what decision you need to make, right? तो पहले ऐसा था कि इतना नहीं था widely used in India, because in India we used to follow astrology and Vedic astrology mediums more for predictions and other things, but tarot helps you find out the near future. Okay. Then the important thing to keep in mind about the historical roots of tarot is that they aren't important right now. Okay. In the end, all that's important is a very long time people have been laying these questions at the feet of 78 little pictures and drawing useful information from the practice. Tarot cards have similarities and dissimilarities with the deck of cards and its numbers, letters, and courtly kings, queens, and plus suits. So बहुत सारे इसमें आपको कोर्ट कार्ड्स, किंग क्वींस के कार्ड और सारे चीजें मिलेंगी. सो जैसे जैसे आप उसको आगे पढ़ोगे आपको समझ आएगा दैट हाउ डज इट वर्क.
However, tarot cards are not for playing. So obviously, हर किसी के हाथ में आपको अपने cards को देना नहीं है. It's very important. It is not for a playing purpose. Its use borders the divinity with graphic representations of energy and events that people are likely to encounter in their life, like decision making, reflection, heartache, togetherness. So many चीजें, many डे टू डे लाइफ की जो हम चीजें, रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है, करियर के रिलेटेड इश्यूज है, या जनरल आपका लाइफ स्टोरी कैसा चलेगा, किस तरह से काम हो गए आपके, तो ये सारी चीजें यू कैन फाइंड आउट विथ योर टैरो कार्ड्स. ओके. नाउ what's the introduction? Now, tarot deck, as I said earlier also, it's divided into the group of cards, the major arcana of 22 cards, and the minor arcana is called the lesser arcana also. Okay, उसमें 56 cards are. Now, the minor arcana is also divided into four suits, that is the wands, the pentacles, the cups, and the swords. Okay, so there are 14 cards in every suit. तो स्वॉर्ड्स के आपको दिखेंगे कि 14 कार्ड है, कप्स के 14 कार्ड है, एंड पेंटिकल्स के 14 है, एंड वॉन्ड्स के भी 14 है. सो इन टोटल इट इज 56 माइनर कार्ड्स. ठीक है. नाउ प्लेइंग कार्ड डेक इज ऑलमोस्ट द सेम एज द टैरो माइनर अरकाना, बट विथ फोर मिसिंग कार्ड्स, दैट इज द पेज ऑफ द सूट. पेजेस उसमें नहीं है. बाकी अगर आप कंपेयर करोगे जो हमारे इंडियन प्लेइंग कार्ड्स है, जो वो भी cartomancy, which is it is called as cartomancy, and it is being used widely for predictions as well. But here, of course, we are using for playing purpose, लेकिन इससे भी predictions किए जाते हैं. ठीक है. तो playing card deck and tarot share the knights as the jack. ठीक है. Queen, as you know, king, you know, but tarot also has a page. Page playing cards में नहीं है. बाकी otherwise if you see, सारी चीजें आप उससे रिलेट कर पाओगे अच्छे से. Now, playing card is a Chinese invention documented already in the 9th century. The actual tarot appeared in Europe around 1440 for the first card games. Okay, our modern deck of playing cards has the same origin. By the time two decks developed differently according to the use of the decks for divination, cartomancy commenced already in 16th century and grew during the following centuries. So 16th century के बाद से tarot का evolution has started, if you see, you know, and it has also been kind of collaborated with playing cards as well. And now it has been widely used in, now we are in 20th century, and 20th century में काफी इसका यूज किया जाता है टैरो कार्ड्स का. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रो अबाउट टैरो. रूल्स मैंने आपको बता दिए, आपको उस तरह से उसको फॉलो करना है. और इफ यू सी दिस कार्टोमेंसी डेक ऑल्सो, जैसे एस, A 2 3 4 5 10 तक, एंड देन जैक क्वीन एंड किंग, उसी तरह वी हैव आवर टैरो डेक्स ऑल्सो. दिस आई हैव गिवन यू जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि आपको ज्यादा अपने माइंड को प्रेशराइज करके मगअप करने की जरूरत नहीं. जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट ये चीजें हम रिलेट कर पाएंगे. व्हेन वी नो दैट प्लेइंग कार्ड्स हर कोई यूज करता है, तो ऑब्वियसली आपको समझने में आसानी हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प यू to understand tarot more in a easier way. So this is how I explain to my students, and they are very well versed with, who all have done tarot card reading courses from me. Obviously, they're very confident as tarot card readers. They don't have to mug up things. They don't have to think कि इसका मीनिंग क्या होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. Now in today's date, there are lots and lots of tarot card readers who teach in a very different style. Everybody has their own style of teaching. I have my own style of teaching. I have done my own personal research in what I am trying to give it to you on your platter. ठीक है. तो आपको वो चीजें लेनी है और उससे भी आगे बढ़ना है. ओके. सो अगर हम देखें तो जो क्लब्स, स्पेड्स और हार्ट्स और डायमंड्स जो हमने देखे हैं प्लेइंग कार्ड्स में, वो अभी वॉन्ड से रिलेट होंगे. जो क्लब्स है, दीज आर द वॉन्ड्स इन द टैरो कार्ड्स. स्पेड्स आर द स्वॉर्ड्स इन आर टैरो कार्ड्स. Hearts are the cups in the tarot cards, and diamonds are the pentacles.
There are different names also which has been given like chalices, goblets, vessels. तो different decks में different नाम यूज किए गए हैं. बट अगर हम राइडर वेट वर्जन को स्टिक करेंगे तो फर्स्ट वाले जो नाम है वॉन्ड, स्वॉर्ड, कप एंड पेंटिकल्स यही यूज करेंगे. ठीक है. अगर आपको ये वाला जो डेक है बेसिक राइडर वेट वर्जन आपको थरो हो जाता है, दैट इज व्हेन यू गो फॉर अनदर डेक और ट्राई डूइंग रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट डेक्स. बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइस uh, taking any further decks as of now until you are pro with this version of tarot. Okay? So obviously wands will talk about your creativity, your skills, your will. Okay? Swords is about challenges, your wisdom, your reason, your logic, your intellect, how it works. Cups जो है ज्यादातर heart matters होते हैं, तो it talks about your spirituality, emotional matters and love matters. ठीक है. और पेंटिकल्स जो है these are more to do with money matters and possessions and career or something related to materialistic needs what a person requires. So this is the basic understanding of tarot. तो ये आपको बेस लेवल पे आपको पहले ये समझ लेना है कि किस तरह से we are going to learn tarot. ठीक है. Now coming to the minor arcana, these consist of 14 different cards. Okay, there are माइनर अरकाना के चार डिविजन्स है. जैसे कि मैंने बताया 56 कार्ड्स है. 56 में 14 14 14 14 एक एक सूट्स को दिए गए हैं. करेक्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सूट विच इज द सूट ऑफ पेंटिकल्स. जहां पे आप देखोगे दैट इट इज लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12. ओके, sorry, not 12. The page and the knights, the queen and the king. ठीक है. तो एस टू 10 तक के कार्ड्स है. उसके बाद हमारे रॉयल अरकाना है विच इज द पेज, नाइट, किंग एंड द क्वीन. ठीक है. सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एलिमेंट डज पेंटिकल्स बिलोंग टू. ठीक है. पेंटिकल्स बिलोंग करता है अर्थ एलिमेंट से बिकॉज इट टॉक्स अबाउट मेटेरियलिस्टिक नीड्स, it talks about physical needs, it talks about money matters, it talks about uh, possessions, land, properties, मनी मेकिंग डिसीशंस. तो ये सारी चीजें अर्थ एलिमेंट से डिनोट करती है. तो आप देखेंगे कि इसमें 14 कार्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स है. नो वी विल obviously learn the meanings when we are doing the card readings one by one. Okay. This is for your understanding that how is the minor arcana divided into four parts. ठीक है. Now next suit is the suit of swords. अगर आप ये देखोगे it belongs to the air element. Okay. Now ace to 10 के cards है और उसके अलावा there are some the same king, queen, page and the knights are also there with the swords. तो इसमें भी different different pictures दिए गए हैं and we will come back to the meanings when we are doing it, but it's very important that you guys know that कौन से element को ये belong करता है. उससे आपको आइडिया आएगा कि when a client is having too many say swords के cards or maybe too many pentacles के cards, so what is the energy that is hampering to the situation, that is again very important. तो वो आपको देखना है. ठीक है. उसी तरह हम नेक्स्ट वाला सूट जो देखेंगे दैट इज द सूट ऑफ wands which is the fire element. Okay, अगर आप इसके भी पिक्चर्स देखोगे तो we have ace to 10 again and then we have the four uh, royal arcana which is the page, knight, king and the queen. ठीक है. So, आपको एलिमेंट्स सारे याद रखने हैं and you have to memorize all the elements of every suits. Okay, wands का कौन सा एलिमेंट है, swords का कौन सा एलिमेंट है, पेंटिकल्स का कौन सा है, ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. हर चीज आपको मगर मगअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बट देर आर बेसिक थिंग्स दैट यू विल obviously as a tarot reader you guys have to remember. Okay, it's very important. It's not just कि हाँ मैंने आपको कार्ड का मीनिंग बता दिया and then I'll just finish off the course. No, it does not work like that. We have to understand each and every pros and cons. We will have to see, get into the symbolism. We'll have to get into the deeper meanings of each and every card and different aspects. तो बहुत सारी चीजों का इसमें accumulation होगा. ठीक है. And then coming back to the suit of cups, which is again the water element or the emotional. The You can talk about relationships or
how the person is feeling, राइट नाउ इमोशनल लेवल पे कैसा फील कर रहा है वो, या फिर वो क्या ज्यादा इमोशनल कॉल्स लेता है, या फिर इज इट लाइक दो ही, अगर आपको करियर में जाना है एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू मेनी इमोशनल कॉल्स, देन हाउ वुड यू गो अहेड विथ योर यू नो डिसीजंस इन करियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वाटर एलिमेंट भी कैसा है वो हम जाने. तो सूट ऑफ कप्स विच डिनोट्स द वाटर एलिमेंट. सो हमने देखा है कि चारों जो सूट्स है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है. ओके, एज ऑफ नाउ डोंट बॉदर योर सेल्फ अबाउट the look or the picturization of the cards, because there's lot of intensity with each and every card. There's a lot of in-depth meanings of each and every card. We will get into that. But right now, जो बेस का इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है कि आप वो पहले समझे. ठीक है. Now, this I have named it as a Royal Arcana. People call it as a court card also. They call it like court cards या Royal Arcana both. So you have to be ready with the keywords या फिर इनके names क्या. Anybody who would just ask you कि ये क्या होता है वो क्या होता है, you should be aware that what is it called. Correct. This is again very important. So Royal Arcana or the court cards, जैसे कि मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स में भी बताया, पेज, नाइट, क्वीन, किंग, तो ये सारे वॉन्ड्स के हैं. अगेन पेज, नाइट, क्वीन, किंग, दैट इज कप्स. ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज का नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड अगेन वी सी द पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो ये एक सेपरेट हम लेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रॉयल अरकाना. ओके, and their elements, of course. यहाँ पे I have seen that lot of students or people who are already into tarot, they face a lot of problems because cards almost similar दिखते हैं उनको. But I am going to teach you how it is different from each and every card. Okay, that's very important. बिकॉज आपको लगेगा पेज तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, नाइट्स तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं. नहीं, वैसा नहीं है. वी विल हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कार्ड. So we will be getting into again the deeper level of understanding of these cards as well. Okay. Now, this is a very important thing that we need to discuss before starting or getting into a tarot card reading. Okay. ये जो मिस्टेक्स है ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हर टैरो कार्ड रीडर करते हैं. Okay, so you as professionals, obviously you have to be ready कि हम ऐसी गलतियां ना करें, because we are not here to misguide people or mislead people for just money making things. I want you guys to grow professionally, and of course in a more mature way. And हमको हमारा जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है या फिर हम जो लोगों से ऑब्वियसली इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द क्लाइंट्स, वी आर गेटिंग इनटू देयर ऑरिक फील्ड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस प्रॉब्लम्स. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको भी समझो एंड साथ साथ में उनकी जो एनर्जीज है वो आपकी ऑरिक फील्ड में नहीं आनी चाहिए, उसका भी आपको ध्यान देना है. So we will obviously I'll be talking a lot with each and every card as it goes, but these are the basic mistakes that everybody should be aware of. Okay. Now you do a reading when you're highly emotional. सबसे पहली बात, whenever आपका मूड खराब है or you are dealing with mood swings, or if you're not really feeling good about doing a tarot card reading, or you're emotional, you are overwhelmed, or maybe you are not in the right frame of mind to do the cards. It can be any situation, कोई भी situation हो जाने दो. ये जो situations है उसमें आपको tarot reading ना अपने लिए करनी है, ना आप अपने clients के लिए करोगे. Might as well, of course, you will have to either talk to the client and postpone your reading for the other day, or maybe once you're fine and you can get back to them on the timings, something like that. लेकिन आपको अगर पता है कि today you're not in the right frame of mind, don't go ahead with those readings. It's not important. ठीक है? It is a very good idea to do a reading. Sorry, it's never a good idea to do a reading when you're emotional, because at that time your emotions are running, and when you interpret a card it might be based on your emotions. तो क्या आपके माइंड में जो चल रहा होगा, जैसे कि अगर मेरे को किसी के लिए हेटरेड है फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम लाइक
very angry on this person and I'm having a lot of, you know, hatred or revenge things, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो ऐसे ही कार्ड्स पॉप अप होंगे. सो ऐसे सिचुएशन में मेक श्योर दैट आप अपने क्लाइंट्स का रीडिंग्स या अपना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन वाला रीडिंग्स ना करें. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. यू शुड सेटल डाउन, रिलैक्स, मेडिटेट फॉर 5-10 मिनट्स. यू शुड इनहेल एक्सहेल का एक्सरसाइजेस करो एंड देन गेट बैक मे बी हाफ एन आवर 1 आवर लेटर व्हेन यू फील दैट ओके राइट नाउ आई एम रेडी टू डू इट. तब आपको ये चीज करनी है, बट नॉट व्हेन यूर इमोशनल. समझो कि आज का दिन मेरा बहुत खराब गया है एंड आई डोंट वांट टू डू अ रीडिंग, सो प्लीज डोंट डू. बिकॉज इट्स रैदर आप उस चीज को अवॉइड करो, वो बेटर है, या आप मूड खराब है फिर भी आप उनको कोई रीडिंग कर रहे हो जो आउटकम जिसका अच्छा नहीं आएगा. तो इट्स योर चॉइस. तो उस टाइम के हिसाब से आई वुड प्रेफर दैट यू गाइस शुड नॉट टेक अप अ रीडिंग. ओके, you should settle down, feel confident, be neutral. Okay, meditate a bit, relax. नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, do it for the next day, postpone it for the next day, it's fine. ठीक है. ऐसा नहीं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मुझे आज ही करना पड़ेगा, कल मैं नहीं कर सकती, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. नहीं, वो नहीं करना है. when you are highly emotional, please don't do any sort of reading. It will not be accurate. Okay, you will end up doing an inaccurate or misinformed reading जिसमें आप ज्यादा उनको डिटेल दे नहीं पाओगे. जितना आप सोचोगे उससे काफी कम होगी आपकी डिलीवरी ऑन, यू नो, बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स. यू माइट फील अंडर कॉन्फिडेंट कि ये अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसी रीडिंग करके क्यों दी. सो इट्स बेटर कि वो टाइम पे आप ये रीडिंग्स को अवॉइड करो. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू कीप ड्रॉइंग एक्स्ट्रा टैरो कार्ड्स एज क्लैरिफायर्स. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत जरूरी है ये आपको समझना. समझो कि मैंने आपका 3 कार्ड रीडिंग किया. ओके, और 3 कार्ड रीडिंग में मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि सारे कार्ड्स कंफ्यूजन वाले आए. एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ, अब मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ, अब मैं एक और कार्ड. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी. ओके, ये चीज आपको, ये गलती कभी नहीं करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज आस्किंग अ यस नो क्वेश्चन कि मेरा ये काम बन जाएगा या नहीं बनेगा, राइट. वहां पे आप एक्स्ट्रा कार्ड निकाल के करोगे क्या, जब आपका जब काम जो है वो एक कार्ड में हो सकता है. देन वाई टू पिक अप 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स. सो डोंट एवर डू दिस मिस्टेक एज अ टैरो कार्ड रीडर कि आपने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले. डोंट डू दिस. ओके, इट मेक्स सेंस टू ड्रॉ अप अनदर कार्ड टू क्लैरिफाई द वन यू हैव इन योर हैंड. ओके, एक कार्ड आप जरूर ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप एक कार्ड निकाल सकते हो, बट अगेन एंड अगेन डूइंग it will again, confuse you and you will end up giving wrong answers. So like for example, in your hand is 2 of swords, which is about having 2 options. सेम जैसे मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन के आपके कार्ड्स अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप और कार्ड्स निकालोगे और कार्ड निकालोगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, है ना. तो उन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ 2 of swords का कार्ड. जस्ट लुकिंग फॉर दिस कार्ड इफ आई कैन फाइंड इट आउट. जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, तो 2 of swords का कार्ड है जहाँ पे इट्स ऑलरेडी अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन. ओके, जहाँ पे वो पर्सन को ही इज नॉट श्योर अबाउट व्हाट डिसीजन टू मेक. Now, you draw another 2 cards to fully understand what the options are. But when you draw a card, then another card, then another card, then you will get confused. आपको वो नहीं करना है. जब आपको पहले से ही पता चल गया है कि person is already confused and this might not be the right time for him to take this particular decision, right? तब आपको हो सकता है तो आप avoid करो. When आप एक 1 card reading कर रहे हो तो stick to 1 card. When you're doing a 3 card layout, stick to 3 cards. Don't keep on, taking up more and more cards for getting more clarification. This is what most tarot card readers do. ठीक है, वो वहां ही पे गलती हो जाती है और वो एक्स्ट्रा चीजें बोल बोल देते हैं जो उस सिचुएशन के साथ रिलेट भी नहीं करती. ठीक है. So when you're doing a reading, drawing a card, make sure you draw an extra if it is really, really needed to clarify something. Otherwise, it's not required. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि एक्स्ट्रा कार्ड्स मत निकालना.
when it is not required. ठीक है? Now, you do multiple tarot card readings on the same topic. जैसे कि अभी, for example, I have a client, okay, she keeps asking me like, what does he think about me? What does her boyfriend basically thinks about her? Then she will, after some time, she might end up asking like, अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? या फिर does he likes me or not? Does he love me or not? अभी context देखो आप. The context of the readings is the same, right? It is the same. It has nothing to do with different slabs of that particular question. The question is the same. She wants to basically know what's in the boyfriend's mind, right? तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर एक बार रीडिंग करनी है. ठीक है. सो मोस्ट पीपल आर फॉन्ड ऑफ डूइंग अ रीडिंग ऑन द सेम टॉपिक ओवर एंड ओवर अगेन. द क्लाइंट विल आस्क यू. वो क्लाइंट जो मेरे क्लाइंट है, उन्होंने एक रीडिंग करवाई. 2 दिन के बाद सेम क्वेश्चन अगेन, दे आर आस्किंग द सेम टॉपिक, सेम पर्सन, सेम क्वेश्चन. आई डोंट टेक दिस काइंड ऑफ रीडिंग्स बिकॉज आई एम नॉट डूइंग फॉर द मनी, राइट? मुझे कमाना ही है तो आई कैन ऑब्वियसली टेक द रीडिंग्स. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट व्हेन आई नो दैट आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द राइट आंसर दैट दिस पीपल आर लुकिंग फॉर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी looking for answers. They are already impatient. You need to understand the state of mind of the client. ठीक है? So it is not a wonder why people end up getting confused as to what cards are trying to tell to them. ठीक है? सेम टॉपिक पे बार बार मल्टीपल कार्ड्स या टैरो रीडिंग्स नहीं करनी है. कर भी रहे हो तो कीप अ गैप ऑफ 10 days or 12 days at least. I would prefer, because energies change during that time, right? So when you're being asked to do a reading over the same topic again, it is advisable to wait for a month. I have mentioned month to be more precise, but at least 12 to 15 days तक आपको stop करना चाहिए. ठीक है? You research multiple tarot card reading, card meaning for the one you want. ठीक है? So basically people do this very often, very regularly. These people what they do is, suppose मेरे को एक कार्ड आ गया है अभी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो अभी मैं जाऊंगी, गूगल करूंगी, गूगल सर्च करूंगी, एंड देन आई विल सर्च फॉर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग्स. आई विल हैव डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट वेबसाइट्स. ओके, एंड देन आई विल गिव वन वन ऑफ द मीनिंग्स टू द क्लाइंट. डोंट डू दिस मिस्टेक. इसमें आपको कभी कोई सही जवाब नहीं मिलेगा. यू हैव टू वर्क विथ योर साइकिक पावर्स. यू विल हैव टू वर्क विथ योर इंट्यूटिव स्किल्स. एज अ बिगनर, what most people do in online and research what each card mean, and they find out the one card that is having more than one meaning. The tarot card has multiple aspects of each of them. This makes them richer and more complex. अभी हमको नहीं पता नाइट ऑफ वॉन्ड्स मनी के एरिया में क्या क्या मीनिंग हो सकता है, या रिलेशनशिप में इसका क्या मीनिंग हो सकता है, या say your health में इसका क्या मीनिंग हो सकता है. सो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग. कार्ड वही है, लेकिन it will have different meaning in the different aspects. So I prefer don't Google, because आजकल वही लोग कर रहे हैं, या तो कंटेंट भी ऐसा दिया जा रहा है जो गूगल से कॉपी पेस्टेड होता है लगभग. ठीक है. सो व्हेन डूइंग अ रीडिंग ऑफ द कार्ड, रेजिस्ट टेम्पटेशन टू गो एंड चेक ऑनलाइन. ठीक है. ट्राई टू वर्क विथ योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, सी व्हाट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू. अगर ये कार्ड आया है, आपको ज्यादा चीजें, कुछ और ही चीजें रेजोनेट कर रही है, आपका इंट्यूटिव माइंड जो है आपको ये बताने को बोल रहा है कि आप ये मीनिंग उनको बताए, तो फॉलो दैट. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ साइकिक रीडर, एज अ टैरो कार्ड रीडर, you need to get aligned with your crown chakra, and of course uh, go by what your intuition power is telling you, because your intuition is what makes you a tarot card reader, not just the Google किए हुए टैरो कार्ड्स की मीनिंग. सो डोंट डू दैट. ठीक है. हर चीज पे गूगल मत करो. यस, व्हेन यूर लर्निंग फेज, व्हेन यू आर इन अ लर्निंग फेज, ऑफ कोर्स यू विल नीड सम इंफॉर्मेशन. यू विल हैव टू गो, यू हैव टू लर्न, इट्स ओके. बट जब आप क्लाइंट का रीडिंग कर रहे हो, जब आप क्लाइंट के सामने, ऑब्वियसली आप मोबाइल खोल के यू कैन नॉट जस्ट डू अ गूगल सर्च इन फ्रंट ऑफ देम, करेक्ट? तो वो आप नहीं कर सकते. सो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे उसको समझे अच्छे से, एंड देन कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस ऑल्सो, एंड देन इट विल गिव यू द राइट आंसर्स. ठीक है. Moving on to the next mistake, you use a complicated tarot spread.
ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पूछा कि मेरा ये डेट को ये काम हो जाएगा या नहीं, राइट? सो इट्स अ यस और नो क्वेश्चन, वेदर दिस वर्क विल हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट और नॉट, राइट? तो आपको सिर्फ एक ही कार्ड निकालना है, यस और नो. तो उसके लिए आप पूरा स्प्रेड नहीं निकाल सकते कि ओके उस दिन इवेंट पे ऐसा होगा, उस दिन वैसा होगा. आपको वो चीजें करने की जरूरत नहीं है. Always be a good listener when your clients are talking to you. Always listen to what they are trying to convey to you, because their words, obviously, you cannot be asking them too many questions. Let them speak whatever they want to speak. Okay? So, most people are guilty of this. Let us decide whether you should go for a wedding and then bring out a Celtic cross. Celtic cross में कम से कम 10 कार्ड्स का यूज होता है, राइट? तो अभी मुझे वेडिंग के लिए जाना है, तो उसमें मुझे 10 कार्ड जुटाने की क्या जरूरत है? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? And then find yourself finding out what happened in the past, what fears you have buried. All you want to know was whether you should attend the wedding or not. Okay? When it is a simple yes or no question, one card readings, just pick one card. Okay, stick to it. Unless you want a complicated spread, unless the person wants to know in-depth reading of the situation, तब तक हम in-depth में नहीं जाएंगे. Okay? You interpret the tarot reading the way you want. Again, ये भी गलत है. ठीक है? You cannot. There are certain rules. I am not saying that you have to follow each and every rule, but there are certain rules that every tarot card reader should follow. Okay? So when you have personal interest, maybe suppose for example, आप जिसका रीडिंग करते हो, आप उस पर्सन को जानते हो. You're doing a reading for a known person. You might have certain personal interest कि इसका ये काम हो जाए तो अच्छा है, मेरा भी फायदा होगा. No. जो कार्ड में आएगा वो ही आपको कहना है, वो ही आपको करना है. आप एज अ टैरो कार्ड रीडर यू कैन नॉट इन्वॉल्व बीइंग रिलेटेड टू दैट पर्सन. ओके? इवन इफ इट इज योर ब्रदर, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड्स और योर मेंटर और एनीबडी. ठीक है? व्हेन यू आर डूइंग रीडिंग्स फॉर योर नोन पीपल whom you might have certain background already, है ना? आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उनको लेके पता होगी. सो डोंट डू पास योर जजमेंट बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Do a reading as a neutral tarot card reader. How a neutral, like if I'm going to a neutral person who does not know me, that person would do it in a much better way than the person who knows me. Correct? Because that person is not aware about anything about my background. That's why he is non-judgmental. And it's very important that as a tarot card reader, you be more non-judgmental. Okay? Don't judge people. Don't judge your clients. Your clients are very important people. These people are coming to you to seek help from you. वो किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. आपको उनको जज नहीं करना है. You are not going to pass any sort of judgment to these people, whoever it is. There's nothing wrong with in you interpreting the cards for yourself, but for better judgment, you should get someone else for the reading. ठीक है? सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रीडिंग्स नहीं करो. दैट विल बेनिफिट यू और समथिंग. और अपने मीनिंग्स लगाओ, अपने मीनिंग बोलो, नहीं नहीं तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा. यू कैन नॉट से दिस. यू हैव टू फॉलो व्हाट अ टैरो कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल टू यू. ठीक है? तो ये सारी मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर डूइंग अ टैरो कार्ड सेशन. एंड of course, धीरे धीरे you will sink in with the cards. You will understand the deeper meanings of the cards. Okay, let's move on. Now, court cards indicates the nature of the people also. उनके हाव भाव या फिर उनकी उनकी पर्सनालिटी, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पर्सन की, वो बताता है द कोर्ट कार्ड्स. ओके, सिचुएशन. नाउ पेजेस आर ऑलवेज लाइक अ मैसेंजर. कोई ना कोई टाइप की न्यूज वो बंदा लेके आता है. दैट पर्सन ब्रिंग्स इन सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज, or maybe a good news related to new beginnings or something like that. Now, knights, they are more towards travel, change. They are in shifting moments. They don't sit in one place. They are always, uh, from here to there or something like that. उनका nature ही वैसा है, right? So knights will have a different sort of nature. Queen are more motherly figures. They will have this mother figure qualities in them. They will have a lot of female influences. Okay?
And kings, of course, father figures, male influence, and they are more matured than the knights and the pages. ठीक है. इन डिटेल हम इनके बारे में बाद में जानेंगे, बट ये बेस लेवल का चीजें हैं which you guys need to know this. It's very important. Now here's a quick breakdown of the meaning of numbers. जैसे कि 1 to 10 मैंने बताया कि आपके कार्ड सारे के सारे आपके जो सूट ऑफ वॉन्ड, सूट ऑफ पेंटिकल्स एंड सूट ऑफ swords and everything, we have the series from 1 to 10. Now, what does ones indicate? Ones talks about new beginnings, opportunities, passion. Two talks about making decisions, partnerships, talks about the options that we have. Okay. Threes talks about creativity, it talks about cycles, it talks about communication. Fours talk about stability, okay, structure and stagnation. Fives, chaos and conflicts. जनरली कहा जाता है कि 5 और 7 के जो कार्ड हैं इन आर टैरो कार्ड डेक्स, दोज आर स्लाइटली नेगेटिव कार्ड. जब फाइव्स की सीरीज ज्यादा आ जाए या सेवन्स की सीरीज जो है वो थोड़े से स्लाइट नेगेटिव साइड पे जाता है, वी विल लुक इनटू द डीपर मीनिंग्स व्हेन वी आर, ऑफ कोर्स व्हेन वी आर reading the meanings of each and every card. ठीक है. Sixes is about communication, it is about solutions, it is about problem solving, it's about one phase to another phase. Seven is about deep thinking, reflecting into your own self. ठीक है. Eight is about power, strength, authority, and speed. Nine is about completion, abundance, strength of will. 10 is about inheritance, it is about completing one cycle. Okay. So ये सारे basic है, the keywords you can say it for the ace to 10K card. So you can just go through them, and of course I'm going to ask you guys the questions based on this in the next class. I've also given you one more detailed chart for this 1 to 10 and what could be the meanings and what could be meanings based on the element also. ठीक है, तो ये भी आप देखोगे, बट जब हम कार्ड को सीख लेंगे उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो मेजर एंड माइनर का मैंने आपको एक छोटा सा जस्ट दिया है यहाँ पे. And here we end today's introduction session and the basic history. How do we take care of our decks? How do we, what are the mistakes that we need to avoid while doing a tarot card reading? Okay, so there are many other things that we have to follow when we are doing. So those will be uh, obviously discussed in our future sessions. So today, just we end this class today by the basic introduction. See you guys tomorrow.